Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that today we are going to start unit number 15, and the name of our unit is Flowers, Seeds and Fruits. And today is the introduction of this unit. So my dear students, these are the student learning outcomes that we are going to cover in this unit. So let's quickly, I will introduce you now to this unit. So in this unit, we are going to study about reproduction, means the ability of having the young ones, which is a quality of living things. Plants being living also reproduce. Flowers are basic reproductive parts that produce seeds. In the following unit, you will learn about seeds and the benefits of plants they provide us. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि जिस तरह से तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं उनके यंग वंस होते हैं, उनके बेबीज होते हैं, इसी तरह प्लांट्स क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं तो उनके भी वो भी ग्रो करते हैं डिफरेंट प्लांट्स में, या उनके भी न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो होते हैं. सो हम इस बारे में पढ़ेंगे न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, सीड्स कैसे बनते हैं, कौन सा पार्ट है जो सीड्स बनाता है. दे आर फ्लावर्स बिकॉज दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो हम इस बारे में जो है वो इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन लेक्चर नंबर 1 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू study about the name the plants around them which have flowers and which do not have flowers. So my dear students, पहले लेक्चर में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि बच्चे जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे या नेम कर सकेंगे उन प्लांट्स को जो वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं जिनके अंदर फूल होते हैं और जिनके अंदर फूल नहीं होते. Then we will move forward towards lecture number 2 which will be an independent activity. So बच्चे जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे उनके नॉलेज में मजीद इजाफा होगा. Then the lecture number 3 will students will be able to recognize that all fruits have seeds in them. So बच्चे जो है ये बात अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं and those seeds grow into a new plant. Then lecture number 4 students will be able to recognize that students will be able to recognize that plants grow from seeds. So जैसे कि बच्चों को ये पता चलेगा प्रीवियस SLO से कि प्लांट्स के अंदर जो है वो हर सीड के अंदर, हर फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, तो इस SLO के अकॉर्डिंग बच्चे ये जानेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो सीड से ग्रो होते हैं. Then we will move forward towards lecture number 5 and students will be able to recognize that plants grow from seeds again. Then in lecture number 6 students will be able to identify the ways in which plants are used for food, clothing, shelter and etc. Then in lecture number 7 students will follow the teacher's note and perform an activity. Then lecture number 8 will be project number 1, lecture number 9 will be project number 2 and lecture number 10 will be the review of unit number 15 in which we will revise all the concepts and I will provide you with the assessment sheet to evaluate you. So my dear students, you are going to learn a lot of things from this unit. Stay tuned for the next lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.